Krishnapriya will start in 2-3 more minutes once Aslan joins. Okay. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Chalo. Yusuf is also joining today. Let us start aldehyde, ketones, and carboxylic acid. Now, there are certain compounds that you are going to see in this particular chapter. Namely, we have aldehyde. The structure of aldehyde is carbon with a double bond O and hydrogen attached to the same carbon atom. And then we have carbon double bond O, and this is attached with two other carbon atoms in this ketone. Generally, you will see aldehyde as CHO. This is aldehyde. This is generally given as CO, which is ketone. Then you have carboxylic acid, that is C double bond O, which is bonded with OH. This is given by COOH. This is carboxylic acid. Then you will also see C double bond O and OR. Maybe you have seen this in the previous chapter also. This is ester. Then you must have seen this compound also, that is acid anhydride, C double bond O, and oxygen, C double bond O, and then you have R. Generally, it is written as RCO, fold twice O. This is known as anhydride. A common thing in all of these compounds is the C double bond O. Now, we will go to nomenclature, and in nomenclature, we will just do the common name here. Okay? Nomenclature. Now, in nomenclature, write the A part, that is common name. Now, in common name, now you don't write, ठीक है? अब ध्यान से सिर्फ आप लोग सुनिए. In common name, there is a word that you will listen and see many a times, which starts with acid. आप लोग सुनिएगा acid aldehyde, acetone, acetic acid, acetophenol. ठीक है? So acid is something that you will frequently see. ACET. Acid means CH3 C double bond O. ठीक है? Now, if you want to make aldehyde from this, अगर आपसे क्या बोले acid aldehyde, acid aldehyde, then we have CH3 C double bond O. You just need to add a hydrogen here and it will become acid aldehyde, है ना? अगर आपको aldehyde बनाना है तो क्या ऐड करना पड़ेगा? You just need to add the hydrogen. So CH3CHO is the CH3CHO is acid aldehyde. Then we have acetone. Now you have a fragment that is acid, that is CH3 C double bond O.
CH3 C डबल बॉन्ड O में क्या ऐड करेंगे तो कीटोन बनेगा? ओन आ गया ना, ओन मतलब कीटोन होता है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O, व्हाट शुड आई ऐड हियर टू गेट अ कीटोन? टेल मी गाइस, कीटोन के लिए क्या लगाना पड़ेगा इस कार्बन एटम पे? Another CH3. यप, करेक्ट है ना। द लीस्ट दैट यू हैव टू ऐड इज अनदर CH3। तो दिस इज एसीटोन। जनरली बच्चों को दिक्कत इसमें इस वजह से होती है क्योंकि एसिटाल्डिहाइड में 2 कार्बन है, एसीटोन में 3 कार्बन है। तो अगर आपने ये याद करके रखा है ना कि एसिड कहीं पे आया तो 2 कार्बन होगा, तब गलती होगी आपसे, ठीक है? यू विल बी कमिटिंग मिस्टेक्स। सो व्हाट यू हैव टू थिंक इज, एसिड का मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O। नाउ व्हाट शुड आई ऐड टू गेट इट एल्डिहाइड? H। व्हाट शुड आई ऐड टू गेट अ कीटोन? इज CH3। उसके बाद है एसिटिक एसिड। सबसे पहले बच्चे पढ़ते हैं एसीटोन, एसीटोन में देखते हैं 3 कार्बन एटम। फिर वो पढ़ते हैं एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड में देखते हैं कि 2 कार्बन एटम। नाउ दे आर कंफ्यूज, देन दे आर लाइक एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड में क्या होगा, 2 कार्बन या 3 कार्बन, तो उसमें और कंफ्यूजन हो जाती है, राइट? तो सी, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज एसिटिक एसिड है आपके पास, सो CH3 C डबल बॉन्ड O इल विल बी देयर। अब C डबल बॉन्ड O में क्या लगाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, सर बिकॉज इट इज OH। एसिटिक एसिड ना, OH। ठीक है। Now, similarly, you will have acetophenol. Acetophenol, ठीक है। तो फेनॉन है मतलब कौन सा ग्रुप लगेगा बताइए? PHEN फेनॉन है तो CH3 C डबल बॉन्ड विल बी एज इट इज, और C डबल बॉन्ड पे क्या ग्रुप लगा दे? टेल मी, सफिया जोर से फिनॉल। बोलिए। फिनॉल। कौन सा? बेंजीन फिनॉल। बेंजीन। फेनॉल नहीं, बेंजीन, ठीक है। बेंजीन रिंग। ये जो बेंजीन है ना, इसका पुराना नाम था फीन, ठीक है। तो फीन में जब आपने OH लगाया तो आया फिनॉल। मेक सेंस? ठीक है, चलिए, राइट दिस डाउन नाउ। Write this down, raise your hand once you're done. Also, guys, whatever I am teaching now, these things are important. No one is going to ask you to write the structure of acetone, but आपके पास reaction आ जाएगा. Write the reaction of HCN with acetone. So you should know what is acetone, ठीक है? तो जनरली नेमिंग पढ़ाने का मकसद ये नहीं रहता कि डायरेक्टली सवाल आने वाले हैं, बट दीज नेम्स आर ऑलवेज यूज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज वाई इसको हम पढ़ा देते हैं, ताकि एटलीस्ट आपके टेक्स्ट बुक में रहे, टेक्स्ट सॉरी, एटलीस्ट आपके नोटबुक में वो सारी चीजें रहें जो भी आपको जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। रेज योर हैंड वंस यू डन। A similar phrase that you will often hear is form, FORM, ठीक है। फॉर्म का मतलब होता है हाइड्रोजन अटैच विद C डबल बॉन्ड O। अब इस कार्बन पे कुछ लगा हुआ रहेगा, ठीक है। नाउ देयर आर ओनली 2 स्ट्रक्चर दैट वी हैव टू लर्न, formaldehyde and another thing is formic acid। फॉर्मल्डिहाइड में H C डबल बॉन्ड O एज इट इज, एल्डिहाइड के लिए फिर हाइड्रोजन लगा दीजिए, HC डबल बॉन्ड O एज इट इज, और ओइक एसिड के लिए OH लगा दीजिए ना, फॉर्मिक एसिड है तो। आफ्टर दिस यू विल राइट यूज ऑफ अल्फा बीटा गामा, use of alpha, beta, and gamma for position of substituent.
Done, guys. देखिए, let us suppose you have something like this: 1, 2, 3, 4 carbon atoms, and here we have CHO. ठीक है? Now, this position here, this is alpha position. This position here, it is beta position, and this position here, this is gamma position. ठीक है? तो मान लेते हैं ऐसा कि बीटा पोजीशन पे आपके पास एक ब्रोमीन लगा हुआ हो. This is beta. Now, what should I call this? I will call this beta bromo. This molecule is what? 4 carbon atom. इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं ब्यूटर एल्डिहाइड. ठीक है? सिमिलरली अगर आप प्लस 1, 2, 3, 4 COOH आ जाए और यहाँ पे मान लीजिए लगा हुआ है क्लोरीन, देन वी विल कॉल दिस अल्फा क्लोरो ब्यूटेरिक एसिड. ब्यूटायरिक एसिड. सपोज इफ यू हैव 3 कार्बन एटम्स और यहाँ पे है आपके पास COOH, तो यहाँ पे आपके पास लगा हुआ है OH. क्या बोलेंगे? दिस विल बी अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड. अच्छा, अगर CHO होता तो ब्यूटर एल्डिहाइड हो जाता ना, पहले की जैसा. ये हो जाएगा अल्फा क्लोरो प्रोपियोन एल्डिहाइड. इसके बाद लिखिएगा नेमिंग ऑफ कीटोन्स. using alkyl group. Raise your hand once you're done. Now, as we did naming for ethers ना, उसी तरह naming of alkyl group, naming of ketones भी हो जाता है. For example, if you have CH3, C double bond O, CH3. Now here we have two methyl groups and the molecule is a ketone. तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डाइमीथाइल कीटोन. जनरली आपको ना नाम दिया रहेगा, स्ट्रक्चर आना चाहिए. लेट सपोज आपको दिया हुआ है इथाइल मिथाइल कीटोन. सो इथाइल मिथाइल कीटोन इज आपके पास CH3, C डबल बॉन्ड O है, देन यू हैव CH2, CH3. ठीक है? दिस इज इथाइल ग्रुप, दिस इज मिथाइल ग्रुप. इथाइल मिथाइल कीटोन. उसी से अगर आपके पास हो जाए डाई इथाइल कीटोन, डाई इथाइल कीटोन, इसका मतलब देर आर टू कार्बन एटम्स, उसका C डबल बॉन्ड O and then you have again two carbon atoms. Then one name is bit difficult जो आपको मिल सकता है, that is di-tert butyl ketone. इसका मतलब you have C double bond O and this carbon atom, it has 3 carbon attached to it. This carbon atom also has 3 carbons attached to it. So this whole group, it has 4 carbon atoms, 1, 2, 3 और एक ये center वाला carbon. So it is tertiary butyl group. So di-tertiary butyl ketone. After this, you will write some miscellaneous ones. You need to remember these things. ठीक है? ये आपको याद रहना चाहिए. याद हो जाएगा, बहुत आसान है. अगर आपके पास बेंजीन में CHO लगा हो तो इसको बोलते हैं बेंजल डिहाइड. बेंजीन में
C double bond O, CH3 लगा हो, so this is CH3 C double bond O acetophenol. सिमिलरली अगर आपके पास बेंजीन रिंग है और इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड COOH लगा हो, तो क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड. After this, I'm writing a few IUPAC names which are a bit non-conventional. ठीक है, these are not very conventional names, थोड़े non-conventional है IUPAC में. Common name हो गया. So let us suppose you have something like this. अच्छा, एक और चीज आपको बता दें. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास इस तरह से है, you have 1 2 3 कार्बन एटम्स, ठीक है, एंड दिस प्रोपेन 2 ओन, प्रोपेन 2 ओन, ठीक है. So, or you can just write it propanone, because अगर आपके पास 3 कार्बन एटम्स है, then there is only one possibility for the ketone, that is C double bond O. ठीक है, सिर्फ इस कार्बन एटम पे कीटोन बन सकता है. इफ यू हैव C double bond O here, आपके पास यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन आ जाएगा, एंड व्हेन यू हैव हाइड्रोजन इट इज गोइंग टू बी एल्डिहाइड एंड नॉट कीटोन. ठीक है, सो यू कैन डायरेक्टली राइट प्रोपेनोन, और इफ यू वांट टू राइट स्पेसिफिकली तो आप प्रोपेन 2 लिखेंगे, बट जनरली आपको ना प्रोपेनोन दिया रहेगा. ठीक है, इन द एग्जामिनेशन और क्वेश्चंस वगैरह में प्रोपेनोन दिया रहेगा, प्रोपेन, है ना, प्रोपेनोन. उसकी एक तरह, इफ यू हैव 4 कार्बन एटम्स, इसको क्या लिख सकते हैं, ब्यूटेनोन, बिकॉज या तो इस कार्बन पे होगा या तो इस कार्बन पे, दोनों कार्बन पे. और मतलब एग्जैक्ट आईयूपैक नेम अगर बोले तो इट विल बी ब्यूटेन 2 ओन. थर्ड कार्बन एटम हो ही नहीं सकता, बिकॉज इफ डबल बॉन्ड इज हियर आल्सो, देन आल्सो इट इज सेकंड ओनली ना, अगर यहाँ पे नहीं रहता तो. ठीक है, so there is only one position in which a ketone can be found when you have 4 carbon atoms, that is second carbon. तो उसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेन 2 ओन. ठीक है, या फिर ब्यूटेनोन. अब देखिए कुछ मॉलिक्यूल जो कि थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं. Let us suppose you have CHO group in the first, second and the third carbon atom. तीनों में क्या लगा हुआ है, CHO लगा हुआ है. Now there is no way to include all of these CHO in a single main chain. अगर हम मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करें, तो अब आप या तो ऊपर जाइएगा इस CHO के पास, या तो आप इधर जाइएगा इस CHO के पास, तो कोई ना कोई CHO छूट जाएगा. So for this, what did IUPAC suggest was a bit non-conventional, कि आप इसको प्रोपेन लिख लीजिए, 3 कार्बन एटम्स को, you write it propane, then you write 1 2 3 tricarbonaldehyde, कार्बल्डिहाइड. सिर्फ एल्डिहाइड लिख रहे हैं हम, then we are only, when you write only aldehyde, then you don't take the carbon of CHO, then you only write al ना, तब हम कार्बन ऑफ CHO को we take it in the parent carbon chain. लेकिन अगर हम कार्बल्डिहाइड लेंगे तो इस कार्बन एटम को पेरेंट चेन में नहीं इंक्लूड करेंगे. दैट इज व्हाई आवर पेरेंट कार्बन इज ओनली दिस मच, 1 2 3 कार्बन एटम्स. If I am taking carbaldehyde, that means I am also considering, when I am writing the functional group, I am considering the carbon atom. उसी तरह से देखिए, you have something like this, COH, COH, and here also you have COH. Now here I will not consider the COH in the parent chain. These 3 are in the parent. We will have propane 1 2 3 ट्राई, यहाँ डैश नहीं होगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, सिंस आई एम नॉट टेकिंग द कार्बन एटम इन द पेरेंट चेन, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन एटम को पेरेंट चेन में नहीं लेते, दैट इज व्हाई आई एम नॉट राइटिंग ओइक एसिड, राइट, आई एम राइटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, इसी को इसको ना ऐसे ही बिल्कुल रिपीट कर लीजिएगा इन सब चीजों को. सिमिलरली इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस,
CHO. And this will be named as cyclopentane carbonaldehyde. Or you can also name this as cyclopentyl carbonaldehyde. Done, everyone? ठीक है. Just give me a second. That's it. Right, next, method of preparation of aldehyde and ketones. Now, in method of preparation of aldehyde and ketone, हम इसको 3 सेक्शन में पढ़ेंगे. पहला होगा MOP of aldehydes only. Second will be method of preparation of ketones only. And third will be the method of preparation of aldehyde and ketones. क्या मतलब है इसका? ध्यान दीजिए. इसका मतलब there are few certain method of preparation from which we can only prepare aldehyde and not ketones. उसके बाद कुछ ऐसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जिससे सिर्फ और सिर्फ कीटोन बन सकता है. वी कैन नॉट फॉर्म एल्डिहाइड्स. Thirdly, we are going to learn such methods from which we can prepare aldehyde as well as ketone. You write A, MOP of aldehydes only. MOP of aldehydes only. In this, you will write the first one, that is Rosenmund reduction. There is a lot of name reaction in this chapter. ठीक है? Rosenmund reduction. What happens in Rosenmund reduction? You start with acid chloride, R, C double bond O, bonded with Cl, and you treat this with H2 in the presence of palladium over BaSO4. This is going to give you R, C double bond O, and H. That is aldehyde. ठीक है? For example, if you have CH3COCl, H2, presence of palladium over BaSO4, then you'll get the same number of carbon atom. 3 carbon यहाँ पे, तो 3 carbon यहाँ पे, and then CHO. You can use this for the preparation of benzaldehyde also. You have benzene ring, then you have COCl, you add H2, presence of palladium over BaSO4, you will get benzaldehyde. The number of carbon atoms is going to be same. So acid chloride को aldehyde convert करने के लिए, and the carbon atom is same. What do we use? We use hydrogenation in the presence of palladium over BaSO4, H2 PdBaSO4. First name reaction है ना, Rosenmund reduction. Right. The second one, Stephen reduction.
Now in Stephens reduction what happens? देखिए स्टीफेन है ना, स्टीफेन से ही आप याद रखिए RCN, स्टीफेन RCN, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग मटेरियल अगर आपको याद हो गया तो आप सेक्शन के हिसाब से याद कर सकते हैं दैट दी प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी एल्डिहाइड बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली। सो आपको यहाँ प्रोडक्ट क्या मिलने वाला, यू आर गोइंग टू गेट एल्डिहाइड। ना स्टीफेन RCN, स्टीफेन RCN। अब देखिए बहुत आसान, इतना आसान है, CnSnCl2, CnSn और फिर यहाँ पे HCl, ठीक है। सो इन दिस यू आर गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल गेट RCH डबली बॉन्डेड विद NH, रिडक्शन होता है एज इट इज रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन हुआ, ट्रिपल बॉन्ड से यहाँ पे क्या आ गया, दोनों में एक एक हाइड्रोजन जुड़ गया, एंड व्हेन यू हैव एडेड वन वन हाइड्रोजन दिस मॉलिक्यूल इट इज नोन एज imine. Imine is quite unstable. As soon as you add water to it, the presence of an acid, you are going to get RCHO. The number of carbon atom is still same. Okay, you have got aldehyde. You are starting with what? You are starting with nitrile. Nitrile या cyanide जो भी बोल दीजिए आप, ठीक है। So for example, you have 1, 2, 3 carbon atoms, CN. The first step you have SnCl2 in the presence of H positive. Second step में आपके पास H3O positive है ना, H2O में H positive मिल गया, H3O positive, same number of carbon atoms and aldehyde. We can also prepare benzaldehyde using benzene nitrile. You have CN going to use the same reagent, ठीक है, और आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, you will get CHO. Right, the third one, using Dibal H. What is Dibal H? Dibal H is diisobutyl aluminium hydride, diisobutyl aluminium hydride. क्या मतलब है इसका? You have aluminium. Now this aluminium it has one hydrogen because it is saying hydride. और इसके बाद होता है दो isobutyl group. What is isobutyl group? Isobutyl group is when you have something like this. Just give me a second. ठीक है, I think it's a bit more one. हाँ एक थोड़ा सा ना जितना चकरा दिया, this would be here. सही है, 1, 2, 3, 4 carbon atoms here, ठीक है। So this particular fragment it is isobutyl, 4 carbon atom है, ठीक है, 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon and 4 carbon, right? So when 4 carbon is connected like this, it is known as isobutyl. So this is what? This is diisobutyl. There are 2 isobutyl group attached in the aluminium and then you have one hydride. Structure is not very important ना, structure आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा. Now what do we have here? Now using Dibal H we can use 2 starting materials. You can use RCN as well as you can use RC double bond O, OR dash. You can use nitrile or you can also use what? Esters. तो दोनों के लिए ही the reagent that we are using is first step में Dibal H, second step में water, and you will get RCHO. Now please remember the carbonyl carbon will be coming from the ester है ना, तो ये R dash नहीं, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, that not that one, the alkyl group which is connected to the carbonyl atom it is going to get converted to aldehyde, and you can write one line nitriles and esters. 'Can be reduced'
can be reduced to aldehyde using Debal H. Okay. Hope everyone has written this down. After this, you will write the fourth reaction, that is ETARD reaction. Okay. What happens in ETARD reaction? We start with toluene. Toluene is benzene ring that has a CH3 group. ठीक है, दिस टोलुइन, ये सारे नाम ना आप लोगों को याद हो जाने चाहिए. टोलुइन, तो रिएक्ट टोलुइन विथ क्रोमाइल क्लोराइड. किसे रिएक्ट करते हैं? क्रोमाइल क्लोराइड. व्हाट इज क्रोमाइल क्लोराइड? CrO2Cl2 in the presence of H3O positive, that is acidic water. This gets converted into a brown colored complex. We have here CH, inside we have O, CrCl2 and OH whole twice. ठीक है, OH whole twice. This is a brown, this is brown chromium complex. When this is further treated with water in the presence of acid, H plus in the presence of H2O, this forms benzaldehyde. So toluene is converted to benzaldehyde using chromyl chloride. ठीक है, this is just one reaction. इसके अलावा कोई reaction ही नहीं, मतलब ETARD reaction, this one reaction जो आपको याद करना है. You don't even need to remember this brown chromium complex when they ask ना what is ETARD reaction. तो बस आपको इस तरह से शो कर देना. वो just a second guys, यहाँ पे ना इसको काट दीजिए जरा. We use a CS2, पानी यूज करेंगे तो फिर वो आगे एक बेंजोइक एसिड बन जाता है. ठीक है, वी हैव टू यूज हियर अ नॉन पोलर सॉल्वेंट CS2. वो लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ध्यान से निकल गया था. CH3, फर्स्ट स्टेप में CrO2Cl2, सेकेंड स्टेप में H plus in the presence of H2O. That's enough. This is enough for ETARD reaction. Similarly, another oxidizing agent, that is we can use chromic oxide. Fifth you will write using chromic oxide and acetic anhydride. No. Here, again, we are going to start with toluene, benzene ring with CH3 group. You will start with CrO3 in the presence of acetic anhydride. Acetic anhydride is CH3 C double bond O, oxygen, then C double bond O CH3. This is acetic anhydride. This is going to give you benzylidene diacetate. You have CH, and here you have O, C double bond O, CH3 whole twice. This is known as benzylidene diacetate. And further treatment with acidic water,
H3O positive. This gets converted to benzaldehyde. Right, the sixth one. By side chain chlorination. Here, CS3. The presence of Cl2 and H nu, free radical halogenation takes place, and we get benzene ring as it is, carbon atom with one hydrogen and then two chlorines. Okay. The two hydrogens are replaced by chlorines. Then we add here water at high temperature, around 100 degrees Celsius, that is 373 Kelvin. Now, when you are going to add water, then nucleophilic substitution will take place. Once nucleophilic substitution takes place, this will get converted to benzene diol. You have one hydrogen atom, and there are two OH group attached onto same carbon atom. Now, this is known as gem diol condition, where carbon atom is having two OH and chlorine is replaced by OH. Here, what happens? One of the oxygen atom attacks on the hydrogen, और यहाँ पे आपके पास इस तरह से water निकल जाता है. Because the hydrogens will be highly delta positive, having a positive charge, and very nearby you are having lone pair of oxygen. इस तरह का attack बहुत आसानी से हो जाता है, and this hydrogen gives its electron to form the double bond, and this gets converted to benzaldehyde. You have CHO. ठीक है, यहाँ से क्या निकल जाता है? पानी निकल जाता है, H2S also formed. So toluene से benzaldehyde के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, right? You can start with ETARD. You can use chromic oxide side chain chlorination from toluene. Right. The seventh one, Gatterman-Koch reaction. Gatterman-Koch reaction. Right. Seventh one, Gatterman-Koch reaction. Here, when benzene, it is treated with carbon monoxide in the presence of HCl and anhydrous AlCl3, it gives you benzaldehyde. ठीक है, this is simple Gatterman-Koch reaction. याद रखने के लिए, see, you know manholes, right? When you have what I can say, sewer lines, right? Sewer lines in the roads, they have certain entry points in the roads. Those entry points, if you look at the cover, it looks somewhat like benzene. So you can remember gutter, right? Those gutters are sewers, right? So gutter, that is gutter.
So you will remember the benzene from there, and you will remember CO from this KO. KO से आप CO याद रखिए, and HCl is more important here. और यहाँ पे आप देखिए HC, तो यहाँ से आपको HCl याद रहना चाहिए. Try to figure these things in your mind as a, then it will help you in remembering the name reactions. Write this down. Waiting for Krishna Priya. Now write the B part. Method of preparation of ketones only. ठीक है? Method of preparation from which we can prepare only ketones. The number one is from acyl chloride. From acyl chloride. Now, in order to prepare it from acyl chloride, the main reaction is you have R, C double bond O, Cl plus dialkyl cadmium. That is, there is alkyl group, some other alkyl group, dialkyl, so two alkyl groups, cadmium Cd. Dialkyl cadmium. यहाँ से क्या होगा? RCO from acid chloride. It will be connected to RCO from acid chloride. It will be connected to the R dash of cadmium. R dash of cadmium. ठीक है? देखिए, for example, PC. Let us suppose you have two carbon atoms. You have two carbon atoms, C double bond O and Cl. ठीक है? Plus यहाँ पे आपके पास है CH3 whole twice cadmium. Now, when these two are reacting, please remember, when these two are reacting, then what will happen? CH3 C double bond O will be as it is. CH3 C double bond is as it is. And what group will be coming from dialkyl cadmium? R dash, na? R dash क्या है यहाँ पे? CH3. Make sense? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. ठीक है? चलिए, write the product of the following. Write the product of these two. Send the answer on my WhatsApp. Yes, Arsalan, very good, correct. Waiting for Safiya and Krishna. Okay, Safiya got disconnected.
Yes, very good, Bishop. Yeah, correct. So here you will have 1, 2, 3 carbon atoms, C double bond O and CH3 from the dialkyl cadmium. You have C double bond O and C2H5 from the dialkyl cadmium. Now, देखिए प्रोडक्ट बनाने आपको आना चाहिए. Now please write the preparation of dialkyl cadmium, है ना? Dialkyl cadmium को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है? Preparation of dialkyl cadmium. Now, dialkyl cadmium के लिए you need a Grignard reagent, some R-MgBr. It will react with cadmium chloride and it will give you dialkyl cadmium, R dash twice and cadmium. ठीक है? For example, if you are using CH3MgBr plus cadmium chloride is going to be same. आपको क्या मिलेगा? You will get CH3 whole twice cadmium. Similarly, अगर आप बना रहे हैं CH3CH2 MgBr plus cadmium chloride, then in that case आपको क्या मिलेगा? You will get C2H5, है ना? CH3CH2 क्या होगा? C2H5 whole twice cadmium. ठीक है? Make sense? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. Now देखिए, अगर आपसे सवाल इस तरह से आ जाए, now you can see that the alkyl group of cadmium is coming from what Grignard reagent. ठीक है? अगर आपसे कुछ इस तरह दे दे कि you have Grignard reagent something like this, 1, 2, 3 carbon atoms. सफिया ने ग्रुप में भेज दिया, सफिया ने डिलीट कर दिया, बट सफिया क्लास में नहीं है. Let's suppose you have 3 carbon atoms and then MgBr plus, और आपको दिया हुआ इस तरह से कुछ. फर्स्ट स्टेप में कैडमियम क्लोराइड और सेकंड स्टेप में आपको दिया हुआ लेट अस सपोज CH3COCl. ठीक है? एसिडिक एसिड क्लोराइड. सफिया क्लास में क्यों नहीं है? सफिया करेक्ट, प्लीज ज्वाइन द क्लास. Safia, why did you disconnect? Sir, गलती से I think so. I don't realize. ओह अच्छा, खैर. सो प्लीज थोड़ा ध्यान दे दीजिए यहाँ पे, है ना? वी आर टॉकिंग अबाउट, हमको लगा आप छोड़ के चले गए क्लास को. ठीक है, देखिए प्रिपरेशन ऑफ डाइअल्काइल कैडमियम. ओके, हाउ टू प्रिपेयर द R dash twice CD. We react Grignard reagent with cadmium chloride to get dialkyl cadmium. So if we are having methyl magnesium bromide, then the dialkyl cadmium will be dimethyl cadmium. If you have ethyl magnesium bromide, you will get cadmium chloride, sorry, plus cadmium chloride, will get diethyl cadmium. Make sense, Safia? Yes, sir. यहाँ पे कौन सा ग्रुप है बताइए? What are we having? How many carbons? Propyl. हाँ, प्रोपाइल, है ना? तो देखिए, जो आपके पास अल्काइल ग्रुप ग्रिग्नार्ड रीजन पे लगा हुआ है, द सेम अल्काइल ग्रुप इज कमिंग टू द कैडमियम एंड द सेम अल्काइल ग्रुप इज गोइंग टू द C डबल बॉन्ड O. ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास है 3 कार्बन एटम्स कैडमियम क्लोराइड एंड देन यू हैव CH3COCl. सो इट विल बी CH3 C डबल बॉन्ड O एंड इसके बाद कितने कार्बन एटम्स? 3 कार्बन एटम्स, 1, 2, 3. गाइस, मेक सेंस? यस और नो? प्लीज टेल मी. Yes, sir. प्लीज राइट दिस डाउन.
from nitriles using Grignard reagent from nitriles using Grignard reagent. ठीक है, देखिए इन जनरल पहले रिएक्शन कैसे होता है. यू हैव R MgBr Grignard reagent. You treat this with R dash C triple bond N. ठीक है, क्या है ये नाइट्राइल. ठीक है. Now what will happen, please see. The alkyl group of Grignard reagent, पेन वेन छोड़ के ना थोड़ा देख लीजिए इस बच्चे से. The alkyl group of Grignard reagent will be having delta negative charge because it is connected with magnesium, which is metal, and metal have tendency to give electrons, making the alkyl group delta negative. Now the carbon atom that has a triple bond with nitrogen, it will get a delta positive charge because it is connected with more electronegative element. अब यहां से क्या होगा, this alkyl group is going to attack on the carbon atom like this. Carbon atom already has 4 bonds, so it will break one of the bond with nitrogen atom. Nitrogen atom se kyun? Because pi bond is weaker, it breaks the pi bond. Now what we will get? See here, this R dash is as it is, single bond as it is, carbon double bond nitrogen. ठीक है, carbon double bond nitrogen, and this alkyl group is attached onto this carbon atom. और नाइट्रोजन के साथ क्या लग जाएगा? MgBr. नाइट्रोजन के साथ क्या लग जाएगा? MgBr. Now after this you have to add water in the presence of acid, H2O in the presence of H plus. Now when you are adding H2O in the presence of H plus, आपको क्या मिलेगा? देखिए, ऑक्सीजन, ऐसे होता है ना वाटर. ठीक है, ऐसे होता है वाटर. ध्यान दीजिएगा, you will have, where is the total now? ये C डबल बॉन्ड O बन जाएगा और यहां से आपको क्या निकल जाएगा? NH2, एक और हाइड्रोजन आटम आएगा इस तरह से. फिर उसके बाद वन मोर वाटर मॉलिक्यूल. यहाँ पे देखिए आपको क्या मिल गया पूरा का पूरा? NH3 MgOHBr. ठीक है, और यहाँ पे R डैश C डबल बॉन्ड O, ये मेन है आपके पास. दैट यू विल गेट R डैश C डबल बॉन्ड O एंड देन फिर यहाँ पे R ग्रुप. ठीक है, make sense? Yes or no, please tell me. Now this particular R dash C double bond O, this is coming from the R dash CN. और ये जो आपके पास alkyl group आया है, this R, it is coming from the R MgBr. ठीक है, प्लस यू विल गेट सम बाई प्रोडक्ट, जैसे आपको अमोनिया मिलेगा, दैट इज NH3, NH3 प्लस यू विल गेट MgOHBr. ठीक है, वो सारी चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट दैट यू आर गेटिंग अ कीटोन, and that ketone has 2 alkyl group. The R, one of the alkyl group, it is coming from nitrile, and the other alkyl group, it is coming from the Grignard reagent. Make sense? Yes or no? Please tell me. हाँ जी, बताएं, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, ध्यान दीजिए. अब जरा एक हम सवाल लिखते हैं यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सपोज यू हैव CH3 MgBr. फर्स्ट स्टेप में यू हैव CH3CN. सेकेंड स्टेप में यू हैव H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. ठीक, तो आपके पास देखिए CH3CN, यहाँ पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन. और ये CN वाला कार्बन क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O. और एक आएगा कहां से? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दैट इज CH3. ठीक है, उसी तरह देखिए, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव CH3 MgBr, फर्स्ट स्टेप में यू हैव 2 कार्बन आटम, सॉरी 3 कार्बन आटम CN. सेकेंड स्टेप में आपके पास है H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ H2O. तो यहाँ पे CH3 लिख दिया आपने, एक एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड विद C डबल बॉन्ड O. और CN के अलावा कितने कार्बन है? 2, तो उसको आपने 2 लिख दिया इस तरह से. ठीक है, समझ के जरा इसको कीजिए.
Send your answers on my WhatsApp. Yes, very good, Krishna Priya. Correct. No, Safia, that's not right. या तो आप देखिए, या तो साइनाइड को ले लीजिए, या फिर आप इसको ले लीजिए, क्या नाम है आपका, ग्रिग्नार्ड रीजन। किसी एक से स्टार्ट कीजिए कम से कम, है ना। सी आई एम Okay, डूइंग दिस। फिर से कीजिए एक बार। ट्राई टू लुक एट द साइनाइड पहले, है ना। sir. साइनाइड को देखिए, उसके बाद देखिए कि अच्छा साइनाइड कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ देखिए साइनाइड में कितने कार्बन है, इधर कितने कार्बन, कैसे कैसे हो रहा है, उसको फिर से एक बार करके देखिए। Okay, राइट, वन सेकेंड।
Salam, you have not sent. Safia? Yes, sir. I'm trying. यहाँ पे ना ऐसे मार्क कब कीजिए ना, जैसे देखिए ये CS3 कहाँ लग रहा है आपको, एक CS3 कौन सा, जो CS3 इज हियर ना, और देखिए इसमें कितने कार्बन एटम्स है, 1 2 3, तो ये तीनों कार्बन एटम्स यहाँ आ रहे हैं। उसी तरह से होगा ना, यहाँ पे कितने कार्बन एटम है, टू, 2, sir. है ना, तो 2 कार्बन एटम। ठीक है, उसके बाद क्या लग रहा है, C डबल बॉन्ड O, एंड देन यू हैव 3 कार्बन एटम्स इन टोटल। ठीक है, या तो आप साइनाइड से स्टार्ट कर लीजिए, साइनाइड में कितने कार्बन एटम है, 3, सो यू राइट 1 2 3 कार्बन एटम्स, और ये तीसरे वाले को C डबल बॉन्ड O लग गया, एंड व्हाट ग्रुप इज अटैच्ड, जो भी अल्काइल ग्रुप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, दैट इज 2 अल्काइल ग्रुप्स लाइक दिस। ये बनाया हमने, हाँ ठीक है, मेक सेंस। Yes, sir. Thank You can also make something like this, acetophenone भी इससे बन सकता है। Start with CH3CN, और साथ में आप क्या ले लीजिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, MgBr। सेकंड स्टेप में इन द प्रेजेंस ऑफ H+ वगैरह, तो आपको CH3 C डबल बॉन्ड O, उसके बाद बेंजीन रिंग, एसिटोफेनॉन। Right, next, the third method of preparation for ketones only. Please write Friedrich Kraft acylation of benzene. You have benzene ring plus R COCl in the presence of anhydrous AlCl3, going to give you C डबल बॉन्ड O and then the R group here. ठीक है, I'm going to give you some questions, please try कीजिए। This is ये ऑक्सीजन लग रहा है, दिस इज कार्बन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये कार्बन एटम का बॉन्ड किससे बन रहा है, बेंजीन से। ठीक है, तो कार्बन, बेंजीन वाला कार्बन, और उसके बाद सीधा C डबल बॉन्ड लगा दीजिएगा सब में। ईच ऑफ दीज क्वेश्चन विल स्टार्ट विद बेंजीन, कार्बन में C डबल बॉन्ड, एंड वॉट एवर एल्काइल ग्रुप इज इन द कार्बोनिल कार्बन, वो कार्बोनिल कार्बन में वैसे ही रहेगा। पहले बेंजीन रिंग, फिर C डबल बॉन्ड, सीधा बेंजीन रिंग से कनेक्टेड C डबल बॉन्ड, एंड व्हाट अल्काइल ग्रुप इज इन C डबल बॉन्ड, दैट इज द CH3, यहाँ पे CH2 CH3, एंड देन यहाँ पे बेंजीन रिंग वंस अगेन। Send your answers once you're done.
Yes, Krishna Priya, very good, correct. हाँ, ये भी सही है सफिया, वेरी गुड। CH3 C डबल बॉन्ड को वैसे लिख दिया आपने, और बाकी उधर बेंजीन में सब में ऐड करते गए, है ना। वॉट एवर एसिड क्लोराइड इज गिवन यू रोट इट एज इट इज, एंड देन Cl की जगह बेंजीन। हाँ, ये भी सही है। Arsalan, waiting for you. Yes, sir. Same. ये दो तो सही है, लेकिन CH2 CH3 होगा ना। CH3 कैसे बॉन्डेड होगा किसी चीज से, Oh, yes, sir. है ना। Another way that you can use is, आप क्या कीजिए, CH देखिए, RC डबल बॉन्ड हो वैसे ही क्या है ना, RC डबल बॉन्ड हो इज एज इट इज। यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड हो एज इट इज, क्लोरीन की जगह बेंजीन आ जाएगा। यहाँ पे भी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो एज इट इज, क्लोरीन की जगह बेंजीन आ जाएगा। बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड हो एज इट इज, और फिर क्लोरीन की जगह फिर से एक बेंजीन आ जाएगा। राइट दिस डाउन। अब लिख लिया आपने। Yes, sir. सवाल लिखिए, how will you convert phenol, do लिख लेते हैं, phenol to benzaldehyde, दूसरा phenol to acetophenol। ठीक है, ध्यान दीजिए। पहले सवाल लेते हैं, फिनॉल से बेंजल्डिहाइड जाना है आपको, राइट। सो फिनॉल से कुछ बच्चे ना कन्वर्जन करना रहता है तो फिनॉल बनाते हैं, ऐसे एरो देते हैं और फिर बेंजल्डिहाइड CHO बना देते हैं और सोचते हैं कन्वर्जन हो गया। सो कन्वर्जन ऐसे नहीं किया जाता, यू हैव टू राइट द रिएजेंट्स आल्सो, है ना। तो फिनॉल को सबसे पहले आप कन्वर्ट कर दिए किसमें, बेंजीन में। कैसे, जिंक डस्ट, है ना। जिंक डस्ट डाल के, जेरन डस्ट से आप क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, यू कैन कन्वर्ट दिस टू बेंजीन। बेंजीन आ गया, देन यू कैन यूज गैटरमैन कोच रिएक्शन ना, जहां पे आपके पास क्या क्या रिएजेंट था, यू हैव टू यूज CO, और क्या यूज करना था आपको, HCl। एनहाइड्रस AlCl3 आप यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दीज आर द रिएजेंट। एनहाइड्रस AlCl3 इज जस्ट द कैटलिस्ट, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट बेंजल्डिहाइड।
anhydrous AlCl3, ठीक है, which is a catalyst. Now similar thing that you can use here also, no, phenol से acetophenone जाने के लिए क्या कर सकते हैं आप? First of all, you will go फिनॉल से आपको कहाँ जाना है? C डबल बॉन्ड O, CH3, acetophenol. So zinc dust से you got to benzene, and after benzene you can add CH3, C double bond O, Cl, in the presence of what? In the presence of anhydrous AlCl3. ठीक है? Please write these two conversion. Waiting for Krishna Priya. After this, you will write the C portion, that is MOP of aldehyde and ketones both. Method of preparation of aldehydes and ketones, दोनों के लिए. Number 1, from alcohols. ठीक है, फ्रॉम अल्कोहल्स. और अल्कोहल्स में पहला है आपके पास बाय ऑक्सीडेशन. ठीक है, और ऑक्सीडेशन हम लोगों ने जस्ट पढ़ा था, राइट? सी हियर, ज्यादा कुछ हम नहीं कराएंगे. वी हैव लर्नड अबाउट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, राइट? तो यहाँ पे बस आप इसको कॉपी कर लीजिए. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग और वीक पढ़ा था, सेम थिंग. कॉपी दिस डाउन. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, इसमें आपको ज्यादा ये सब पूरे पूरे नाम लिखने की जरूरत नहीं है. आप बस क्या लिख लीजिएगा? कॉलिन्स रिएजेंट, पीसीसी, पीडीसी, सीआरओ3. ये नाम लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, पीसीसी, पीडीसी, सीआरओ3. यहाँ पे अल्कोहलिक अल्कलाइन को भी यू राइट दिस होल थिंग. ठीक है, यहाँ पे पीसीसी और पीडीसी का नाम और स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, यू विल जस्ट राइट द पीसीसी एंड पीडीसी. देन वी नो दैट 1 डिग्री अल्कोहल when treated with weak oxidizing agent it gives you aldehyde. और जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको? यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड. And when you treat 2 degree alcohol with weak oxidizing agent, you are going to get ketone. Okay, so primary alcohol it is used to convert to aldehyde और secondary alcohol से ketone मिलता है. I'm lowering your hands, write this whole thing down and then raise your hand.
Just waiting for Safia. Okay, also done. Write some questions. Send your answers on my WhatsApp. Just identify the alcohol, whether it is 1 degree, 2 degree. If it is 1 degree alcohol, it will get converted to aldehyde. Just keep in mind the number of carbon atoms will still be the same. If it is 2 degree alcohol, it will get converted to ketone. है ना?
Send your answers on my WhatsApp. No, Arslan. Write the degree of alcohol and then do the problem. Write the degree of alcohol and then do the problem. Yes, sir. Safia, what happened? You guys, what time lag raha hai? Yes, sir, I'm doing. See, just look at the degree, है ना? आपको एक करके बताते हैं. See, this is what 1 degree alcohol. So 1 degree alcohol get converted to aldehyde, and how many carbons? 2 carbon atoms. It will be CH3, CHO. This is 2 degree alcohol. So what will happen? The same number of carbon atoms. How many carbons? 1, 2, 3. This is 2 degree. Same number of carbon atoms, and then just double bond O, ketone. अब यहाँ पे this is 2 degree and this is 1 degree. ठीक है? How many carbon atoms? There are 4 carbon atoms. This 1 degree carbon will get converted to CHO. This 2 degree carbon will get converted to C double bond O. Make sense? Yes or no? Yeah. करके भेजिए. तीसरा वाला जल्दी करके भेजिए. Send it quickly, huh? The other teacher is waiting. नहीं. Krishnapriya, number of carbon atoms. Krishnapriya, number of carbon atoms. Please see. Got it, Krishnapriya? Yes, sir.
Put Arsalan. CH3 मत लिखा कीजिए. देखिए अरसलान, if you are not very comfortable with the number of hydrogens a carbon should have, then please try to write the bond line structure as it is. Count the number of carbon atoms: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. This carbon will get converted to C double bond O. This carbon will get converted to CHO. CHO लिखिए सफिया. Write CHO. Okay. Okay. चलिए. That's it for today.